मेकिंग दिस 3D मफलर। आज मैं ये 3D मफलर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें वूल, क्रोशिया एंड सीजर। ये 3D मफलर है, देखिए। आप चाहें तो इसे ये दो डिफरेंट कलर्स में भी बना सकती हैं या एक सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। इसको मैंने 2 कलर्स में बनाया है। ये देखिए, अब इसकी शुरुआत करनी है। एक मफलर की चौड़ाई के लिए हमें एटलीस्ट 45 चेन स्टिचेस बनाने होंगे। इसके बाद आप एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया की फुल रो बना लीजिए। फुल रो ऑफ डबल क्रोशिया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रो, इस रो के बाद आप एक चेन बनाएंगे, देन टर्न। फर्स्ट उसमें फिर आप एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आप 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, देन सेवन। हमने 10 को आपने इसी टाइप से लेना है। देखिए, फर्स्ट ये हमारा उसका था 1 2 3 4 5 6 7। एट 9 10। अब इन 10 को आप इकट्ठा लाइक दैट। फिर से आप 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3। इस प्लेस पे
देखिए इसी की जो ये प्लेस है, इस प्लेस पे ओके लाइक दैट। अगेन 1 2 and 3. रो के एंड में ये 10 स्टिचेस को आपने किया, one 2 and 3 chains, and at this point make one half double crochet like this, and again 1 2 chains and turn, this point make one double crochet and 5 double crochet here, 1 2 3 4 5. Again there 5 double crochets, 1 2 3 4 5. Okay, that is the place, 3 chain place. Yeah, 2 3 4 5. Complete the row like that. And the last from here, one more double crochet, 1 2 and turn. Again in this, one double crochet,
and at this time there is no 3 chains, only 1 chain, and you will take this 1, 2, 3, 4 and 5 only. First we'll take the 5 and make again 1, 2, 3 chains, and you have to place where? Here, that point. फिर से 3 chains, 1, 1, 2, 3, take this. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take that. Make 3 chains, 1, 2 and 3. Place it there. यहाँ पे इस जगह डालिए, ये देखिए. Again make the 3 chains, 1, 2 and 3. Now again same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2 and 3 chains. इसी तरह पूरी रो बना लीजिए आप. Two and three there. 1, 2 and 3. अब हमारे पास 5 ही बचे हैं, क्योंकि हमने इस बस स्टार्टिंग जो थी वो 5 से की थी. हमारा फर्स्ट लूप 5 का रहा था. लास्ट लूप भी जो हमारा बनेगा वो 5 का बनेगा. 3D इफेक्ट देने के लिए एक बार हमें फर्स्ट लूप जो है वो 10 का लेना है, नेक्स्ट टाइम 5 का लेना है. और वन मोर थिंग हमें जो ध्यान रखना है, जब हम 10 का लेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ. फाइव, sorry, that time no 3
chain stitches, just one chain stitch and then double crochet. या ये अपनी एक मिस्टेक जो मैं बार बार कर रही थी उसको आपको अलर्ट करने के लिए कि जब मुझे 10 का लेना है देन आई विल मेक एट द लास्ट 3 चेन स्टिचेस, और जब मुझे 5 का लेना है तो देन 1 चेन स्टिच, 5 कंप्लीट करने के बाद 1 चेन स्टिच, 10 कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 3 चेन स्टिचेस। इससे हमारी रो एक्यूरेट आती है। देखिए फिर से, अब ये स्टार्ट है। जस्ट मेक 1 and 2 chain stitch and 1 double crochet and start your loop from there. That's it. 5 5 1 loop, 2 3 and 4 5 and 6. For completing this we are making this 6, 1 2 3 4 5 and 6 every time, and one time 1 half, then 1 2 3 4 and 5 and 1 half. Look here. And this time we'll take 5 double crochet in each loop, 3 4 then again 1 2 and 3 chains, and from here again 1 2 and 3 chains, you take the loop, and from there again 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. One, 2, 3, and place it. Like that. हमेशा एक दूसरा जो है इसके सेंटर में आएगा, द प्लेस हियर, सेकंड सेंटर, सेकंड सेंटर,